नमस्ते एवरीवन, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और आज हम स्टार्ट करते हैं भगवत गीता से, क्योंकि कल किसी कारणवश बीच में रह गई थी, अधूरी रह गई थी। तो आज हम उसे संपूर्ण करेंगे। मतलब कि जितना मैंने सोचा था कल करने का उतना हुआ नहीं था, तो मेरा मन भी नहीं था उसे बीच में छोड़ने का, बट किन्हीं कारणवश छोड़ना पड़ गया था। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज दोबारा से कंटिन्यू करते हैं डिस्कोर्स को। यदुच्छाक्षोपनम सर्व स्वर्गद्वारमपावृतं सुखीन क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमिदुष्मन् दुषम् यद्रचाया चोपापनं स्वर्गद्वारमापर्वतं सुखीना क्षत्रिय पार्थ लाभन्ते युद्धमदृश्यम। ये हमने पढ़ लिया था। Fortunate are the Kshatriyas of Partha who get such an unsolicited opportunity for war which offer an open gateway to heaven। यानी कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले युद्ध करने की तो युद्ध करना चाहिए, ये हम एक्सप्लेन कर चुके थे। अब आगे था, in the next 4 verses Lord Krishna explains the evil consequences of not waging a war। कि अगर आप गलत के सामने नहीं खड़े होते हैं, गलत के सामने नहीं खड़े होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नहीं खड़े हो रहे हैं अपने केस को लेके। अगर आप समझिए कि किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उसे होने दे रहे हैं, तो वो भी अगर आप होने देते हैं तो वो भी इसी श्रेणी में आता है। अथ चेत्वमिमं धर्मे संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चित्वामिमां धर्म्यां संग्रामां न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। If you do not wage such a righteous war, then in abandoning your duty and forfeiting your honor, you shall incur sin. अथ चेत्वमिमां धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। Even if you do not know to discharge your duty by waging war, bound by your own action born of your nature, you will have to engage in it against your will। यानी कि जो आपका इनहेरेंट नेचर है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। इवन इफ यू आर बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी, आपको अगेंस्ट योर विल जाके, आपके अपने विल के अगेंस्ट जाके वो युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। If you do not wage war, you will neglect your duty and you will not only lose your reputation but incur sin. Also, moreover, by abandoning your duty, you will have to accept the duty of others, and so you will incur sin, and by abandoning war, you will be regarded as unmanly warrior, and thus you will lose your honor and reputation। अकीर्ति अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते वयं संभावित्स्य चाकीर्ति मृणादितिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि काथ्यस्यन्ति ते वयं संभावितस्य च कीर्ति रमरन्दातिरिच्यते। All beings will ever recount your undying infamy, and that is surely worse than death for a man enjoying popular esteem। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते वयम्। Men, gods, genies, and demons, etc., and all who do not have even the least friendship or enmity with you, such simple beings will recount your infamy and dishonor,
and will call you a coward. If you do not wage war, they will disparage your chivalry and will say that you proved to be a coward, which could not even be imagined. By using the word te, thee, thy, Lord Krishna means to say that Arjun, who is renowned in heaven, in this world, as well as in the infernal world, for his courage, will be called as coward. But using the term avyayam, everlasting, he means that as he is famous for all his excellence and bravery, he will be unpopular for his weakness and timidity forever. Asambhavisya akirti marandati richate. In the first half of this verse, the Lord discusses Arjuna's disparagement by common people. Now he is talking in general terms. In the world, if any man who is regarded superior to others and enjoys popular esteem loses his honor and fame, his insanity is more painful to him than even death. यानी कि जब आप अपनी कीर्ति खो देते हैं, जब आप अपना सम्मान खो देते हैं, तो इसका उससे भी बुरा प्रभाव पड़ता है कि आप मर जाएं. Because in natural death he does not lose his name and fame, while he loses these by shunning his duty. In case of natural death, no crime or sin is committed, but shirking duty is a sin which brings much discredit. देखिए, अब अगर आप ये समझे कि अगर एक एकेडमिशियन है और वो एकेडमिशियन पढ़ाते पढ़ाते अपने प्राण त्यागता है, तो दैट इज ग्रेट. जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, राइट. वैसे ही अगर कोई योद्धा युद्ध में अपने प्राण त्यागता है तो उसे वीर गति में प्राप्त कहते हैं, राइट, चाहे वो किसी भी साइड से हो, राइट. भयाद्रणादुपरतम मनस्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम् भायाद्रणादुपारतं मामश्यन्ते त्वं महारथा येषं च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्. The great chariot warriors who held you in high esteem will consider you as lowly, think that you have desisted from war out of fear. देखिए, दूसरे तो यही सोचेंगे कि आप जो युद्ध है, युद्ध से आप डर के भागे हैं. ये कभी कोई नहीं देखता है कि आपके मन में क्या है. हमेशा यही देखा जाता है कि दूसरा बंदा क्या कह पा रहा है और कौन सा अपना एजेंडा पूरी अच्छी तरीके से मार्केट कर पा रहा है. आज के ज़माने में भी अगर कोई अपने 2 कदम पीछे हटाता है किसी भी रीज़न से, the other person is having a full discretion to say anything about any other person. And if that person is able to sell that entire theory, then in that case that theory is considered as true by the public. कोई भी पब्लिक ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स पे बिलीव नहीं करती कि डॉक्यूमेंट्स तो एक बार देखें. जैसे कई बार आप न्यूज़ पे रिलाई करते हो फॉर ऑल द लॉज एंड वेरियस अदर थिंग्स, लेकिन अगर आप उनकी रूलिंग्स पढ़ेंगे, अगर आप रूलिंग्स के डॉक्यूमेंट उठा के डायरेक्ट पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो द प्योर थिंग व्हाट इट वाज एंड व्हाई इट वाज सेड, राइट. येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लघवम् भयद्रनादुपरातमं मामश्यन्ते त्वं महारथ. If you think that you have desisted from war in order to attain salvation by avoiding sin, it is not true. If you had thought of it as a sin to wage the war, you might have spent some time in devotion and meditation in solitude and would not have invited me to wage this war. Therefore, if you desist from the war, all the living beings will think that you have done so out of fear, not out of sense of duty and righteousness, as it is the first and the foremost duty of the Kshatriya to fight. Yesham cha tvam
bahumato bhutva yashyasi laghavam. The great chariot warriors such as Bhishma, Drona, Kripa, and Shalya, etc., who hold you in high esteem for your mighty valor, because you have defeated several demons, gods, and demigods, etc., you will fail in their esteem as one who has fled from the war front out of fear or death. अवाच्य वादाश्च बहुन विदिष्यन्ति त्वाहिता निन्दन्तस्तव मामथय ततो दुःखतरन्नु किम् अवाच वादंश्च बहुन् वादिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. Your enemies, disparaging your strength, will speak in unbecoming teams. What could be more distressing than this? अवाच्य वादंश्च बहुन् वादिष्यन्ति तव हिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम्. Your sworn enemies such as Duryodhan, Dushasan, and Karna, etc., in spite of knowing your deeds of valor, we will belittle your strength and will laugh at you and call you a coward and impotent. How will you bear those insolent jokes and irreparable ignominy? Tato dukha taram no kim. What can be more painful than this? It is generally seen that a person of respectable and high standing cannot tolerate insults from persons of low standing, and he performs deeds of mighty valor beyond expectation. Similarly, you will not be able to tolerate ignominy and slander, and so there will be no alternative for you but to wage the war that has been declared. So, how could you bear the ignominy? इसमें भी सही है कि अगर आप अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाते हो, and then the other person will take a chance to say whatever he or she can say with all his or her whims and fancies, right? तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी while you're in a war. While you're in a war, you have to make sure that your stand is clear. अगर आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हो, सिर्फ ये मान के भी कि भगवान की इच्छा है कि नहीं है, भगवान की इच्छा हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप युद्ध नहीं लड़ते हो और आपका नेचर है युद्ध लड़ना, आप युद्ध के लिए ही बने हो, तो आप अगर युद्ध क्षेत्र से डर के भागते हो तो आपके पीछे से कोई भी कैसे भी कोई भी एजेंडा चला सकता है. After explaining the adverse consequences of not waging the war in the preceding four verses, in the next two verses, Lord Krishna explains the favorable consequences of war. हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतानिश्चय. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादातुष्ठ कौन्तेय युद्धाय कर्ता निश्चय. Slain in battle you will gain heaven, victorious you will enjoy the sovereignty of earth. Therefore arise, O son of Kunti, determined to fight. हतो वा प्रपश्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम. In the 6th verse of this chapter, Arjun raised the question that they will not know whether they would conquer the sons of Dhritarashtra or Dhritarashtra's sons would conquer them. So Lord Krishna answers the question and says, if you are killed by Karna, Krishna answers, Karna, if you are killed by Karna, etc., you will attain heaven. And if you gain victory, you will gain the kingdom.
Thus, righteous warfare would result in good both here and hereafter. So, you should be prepared to wage war, otherwise, you risk to lose both. Krishna, by addressing Arjun as Konte, wants to remind him of the message to wage the war sent by his mother when he went to the Kauravas with the proposal for the treaty. Therefore, he should rise to the occasion with full determination. Arjun was determined not to fight, and Lord Krishna is in the third verse of this chapter ordered him to rise to the occasion. Here Arjun is in a dilemma whether to wage war or not. So Lord Krishna exhorts him to be determined to fight without having any doubts. Here Lord Krishna wants to say that everyone should discharge his duty very sincerely and enthusiastically to the best of his power and ability in whatever circumstances he is placed. Humanity demands it. Appendix. By discharging one's duty, one makes advancements in the world and other world. It means that by discharging one's duty and by abstaining from what ought not to be done, one attains perfection here as well as hereafter. Now this is a very interesting point. Now when Arjun just laid down his bow, तो उसके बाद तो पहले तो उन्होंने थोड़ा डर दिखाया कि देखो ऐसा है, अगर आप ये युद्ध छोड़ के जाते हैं तो many will feel that you are coward and आप डर के युद्ध से भाग गए. लेकिन फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि उनके जो डाउट थे कि ऐसे फिर स्वर्ग कैसे मिलेगा, अगर हम हार जाएं तो ये भी नहीं पता हमें युद्ध के बाद हम हारेंगे या जीतेंगे. तो ही सेड कि अगर आप हारोगे तो वीर गति को प्राप्त होगे, स्वर्ग मिलेगा, अगर आप जीत जाओगे तो किंगडम भी मिल जाएगा, राइट. तो ही इज गोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू थिंक दैट इन दैट वे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए. सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमं वाप्यस्यसि. सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जयो ततो युद्धाय यज्यस्व नैवं पापमावापस्यसि. Treating alike victory and defeat, gain and loss, pleasure and pain, and engage yourself in battle. Fighting thus you will incur no sins. यानी कि आपको युद्ध लड़ना है, फल की इच्छा नहीं करनी है. आपको पेन और प्लेजर सेम होना चाहिए, विन और लूज सेम होनी चाहिए, विक्ट्री और डिफीट सेम होनी चाहिए, गेन और लॉस ये भी समानता होनी चाहिए. कई बार होते हैं कि जब कुछ गेन करते हैं तो खुश हो जाते हैं और कभी कुछ लूज करते हैं तो दुखी हो जाते हैं. मेरे साथ भी हुआ था. तो अपने आप को भी सिखाने के लिए ही मैं ये भगवद गीता का डिस्कोर्स कर रहा हूँ, so that I also learn the basics of my own tradition. Arjun was also thinking that by killing his kinsman he would incur sin. So Lord Krishna clarifies that it is not the war but desire which induces a man to incur sin. So by renouncing desire he should be engaged in war. Sukha dukhe samay kritva labha labho jaya jayo tato yuddhaya yajyasva. In a war, a man either gains victory or suffers defeat. Victory results in gain, while defeat results in loss. Worldly people view gain with pleasure and loss with pain. But your aim is not to think of victory and defeat, gain and loss, defeat, gain and loss, and pleasure and pain, but your goal is to discharge your duty by treating the agreeable and the disagreeable alike. By doing so, you will incur no sin, means you will be free from bondage. Everyone should discharge his duty earnestly and efficiently, whether he has a desire or not for its fruit. By refusing to be affected by favorable and unfavorable circumstances, the mind becomes steady. So, treating the two equally, one should discharge one's duty. Moreover, one should not perform an action for the sake of pleasure and refrain from another for fear of its pain. Scriptures should be the authority in determining what ought to be done
and what ought not to be done. यानी कि आपको अपनी पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता होती। एक एग्जांपल बताता हूँ, सड़क पे चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहली एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू बीइंग अ ह्यूमन, फर्स्ट यू विल हैव टू save the person, you will have to see whether they survive or not, कोई इंसान बचा है कि नहीं बचा है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम सारे के सारे मीडिया का काम कर रहे होते हैं। इट इज़ द मीडियाज जॉब वेदर टू कैप्चर द फुटेज और नॉट, इट इज़ द मीडियाज जॉब वेदर टू हैव द फुटेज एंड टू डिलीवर इट टू द ऑनलाइन टीवी मीडिया और नॉट। अगर मीडिया का काम वो नहीं करते, दैट डजंट मीन कि आपको मीडिया का काम करना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको अपना काम, कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, यू आर अ सिविलियन एंड अनदर फेलो सिविलियन हैज हर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उन्होंने अब मेनी अ टाइम्स भीड़ लग जाती है एंड कोई मदद नहीं कर रहा होता, मेनी अ टाइम्स इट हैज हैपेंड। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एज वेल, कि आपको पहले तो अपनी ड्यूटी पहले पता होनी चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन फर्स्ट, then comes the job and various other things, right? By refusing to be affected by favorable and unfavorable circumstances, the mind becomes steady. So, treating the two equally, one should discharge one's duty. Moreover, one should not perform an action for the sake of pleasure and refrain from another, for fear of its pain. Scripture should be the authority in determining what ought to be done and what ought not to be done. Navam papamam vapasyasi. Here the word sin here has been used both by sin and virtue. The former leads to the bondage of hell and the latter to the constraints of heaven. Both of these deprive a man of salvation and binds him to follow the cycle of birth and death. So Lord Krishna exhorts Arjun to discharge his duty of waging war by being even-minded. This will help him to escape the bondage of both sin and virtue. Something noteworthy regarding this section. In this section of 8 verses from 31st to 38th, Lord Krishna disclosed several variegated feelings. 1. While delivering a discourse or explaining a subject, the beginning should deal with positive aspects. यानी कि जब भी आप कोर्स को भी पढ़ाते हैं तो पहले तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। ये फिलोसोफर्स के लिए भी लागू होता है या फिर एक टीचर्स के लिए भी लागू होता है, राइट? द मिडल विद नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स के क्या आपके नेगेटिव्स रहेंगे, क्या उससे नेगेटिव चीज़ें होंगी, राइट? And the conclusion should again deal with positive aspects, यानी कि concluding positive aspects ही होना चाहिए. In this context also, Lord Krishna in the 31st and 32nd verses explains the favorable consequences of discharging one's duty. In the middle, from the 33rd to the 36th verses, he explained the adverse consequences of not performing one's duty, and again concludes in the 37th to 38th verse by explaining the favorable consequences of discharging the duty and orders Arjun to act accordingly. जैसे अगर आपने कुछ सेल भी करना तो आप पहले फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बताएं कि ये आपके फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, दीज आर द फेवरेबल सर्कमस्टांसेस फॉर यू टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी. देन व्हेन यू डोंट डिस्चार्ज योर ड्यूटी, अगर आप अपना कार्य टाइम से नहीं करते हो, अगर अपना काम ढंग से नहीं करते हो, then that is unfavorable circumstances, तो उसमें क्या क्या नुकसान होंगे. And then finally in the final you will say कि what are the positive aspects of doing your duty, and then you should leave up to the person as to कि ये अब आपके ऊपर है, how you feel about it, that is up to your own discretion whether you want to do the duty or not. In these verses, Lord Krishna has also clarified the doubts arising in the mind of Arjun. For example, Arjun says, I don't foresee any good ensuing from the slaughter of kinsmen. First chapter 31st verse. Lord Krishna replies in second chapter 31st verse, there is nothing more welcoming to a man of the warrior class than a righteous war. In the first chapter 37th verse, Arjun says, how can we by killing our kinsmen be happy? Lord Krishna replies in second chapter 32nd verse,
Happy are the Kshatriyas who get the opportunity of waging such an unsolicited warfare. यानी कि अगर आपको खुली छूट है युद्ध की, जैसे कई बार नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, अब अगर पाकिस्तान ने कुछ किया, आपके पास खुली छूट है, आप अपना हिसाब खुद से तय करें, आप अपना जो वॉरफेयर है वो खुद से तय करें, राइट? सो मेनी अ टाइम्स इन द पास्ट रूल ये था कि इंडिया पाकिस्तान का, कि अगर हम कहीं ड्रिल भी कर रहे होते थे तो पाकिस्तान को बताना पड़ता था. दैट इज इन द केस ऑफ कांग्रेस, राइट? तो अभी ये सीन है, राइट? In first chapter 44th verse, Arjun says, the consequence of the war will lead to hell. In second chapter 32nd to 37th verse, Lord Krishna says, the war is an open gateway to heaven. In first chapter 36th verse, Arjun says, sin alone will accrue to us by waging the war and by slaying them. Lord Krishna replies in second chapter 33rd verse, if you do not wage such a righteous war and abandon your duty, you will incur sin. यानी कि हम अगर राइटियस वॉर नहीं लड़ते हैं और सिर्फ ये समझ के चले जाते हैं यार अगली को क्यों दुख देना एंड ऑल दैट, तो आपको सिन इंकर होगा. In the first chapter 40th verse, Arjun says, the result of the war will be the impity, will take hold of the entire family. Lord Krishna in second chapter 33rd verse says, if you do not wage such a righteous war, you will abandon your duty with righteousness. Third, in second chapter 5th verse, Arjun insists and says, it is better to live on alms than to wage war. Therefore, Lord Krishna in second chapter 38 verse orders him to wage war. Uddhava had a desire to live with Lord Krishna. So Lord Krishna directed him to go to the northern mountains and do penance. There, Shrimad Bhagwat Mahapuran 11 by 29 by 41. It means that desire of any type is an obstacle to salvation. ये भी डिज़ायर ही थी, राइट? तो अगर आप ये डिज़ायर भी करते हैं कि नहीं मैं जैसे तैसे कंद मूल पे रह लूँगा, मुझे किसी राजपाट की इच्छा नहीं है, इन दैट केस एज वेल जो आपकी इच्छाएं हैं ये आपको सेल्वेशन नहीं लेने देंगी. इच्छाओं का मतलब हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी होता है. इच्छाओं का मतलब ये भी होता है कि आप एक सिचुएशन से कहीं भाग के जा रहे हैं या व्हाट एल्स यू आर डूइंग, राइट? In these verses, Lord Krishna has explained in detail some of the things which were referred to in brief. In the second and the third verse of this chapter, for example, earlier the expression anaryajustam, it is shunned by noble souls, was used. Here the expression dharmayadhi yuddha shreyonyat, any other thing more welcome than a righteous war has been used. There the term asvargyam, not leading to heaven, was used. Here the expression swargadwara ma parvartam, an open gateway to heavens, has been used. There the term akirtikaram, not bringing fame, was used. Here the expression akirtim chapi bhutani kathayashanti te vayam, all creatures will even recount your undying infamy, has been used. There Lord Krishna ordered Arjun to fight by using the expression Tyaktvotishtha Parantapa. Here also the he orders him to fight by using the expression Tato Yuddhaya Yujjasva. फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि अब वो ऑर्डर कर रहे कि देखिए आपने तो मुझे बुला लिया अपना रथी बनने के लिए, अब रथी बनने में आया हूं तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा. देखिए द थिंग इज, इसमें यह भी है क्या सीखी हुई कि जब आप किसी के लिए के आगे सरेंडर कर देते हैं तब आपको अपना दिमाग नहीं लड़ाना होता, तब दैट द अदर पर्सन शुड डू व्हाटएवर दैट पर्सन वांट्स टू डू, राइट? आप इसे इस केस में समझिए कि वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर से के इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ आप टीचिंग भी कर रहे हैं, तो अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं
तो जब कोई हेल्प कर रहा होता है तो इसके बीच में यू डोंट हैव टू क्वेश्चन, राइट, यू हैव टू जस्ट बी aware that you have come to that person for help. Now, Arjun asked Lord Krishna to be the Rathi. Now, Lord Krishna will never let him go away or never let him do any sin. क्योंकि आपने अपनी भागदौड़ भगवान के हाथों में थमा दी है. अब भगवान कभी भी आपके साथ गलत होने ही नहीं देंगे. आपको लगता है कई बार आपके मन से कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बट क्या पता भगवान आपके हाथों से कुछ करवाना चाह रहे हो, क्या पता भगवान आपके हाथों से एक बड़ा कार्य करवाना चाह रहे हो, राइट. तो भगवान, अर्जुन ने किसी भी 100 कौरवों को नहीं मारा था. एक्चुअली में 100 के 100 कौरवों को भीम ने मारा था, राइट. बट he actually played a very important role, so his son, right. Appendix. The Gita teaches the remarkable art of spiritual upliftment through one's own healing, so that a person under all circumstances, having all kinds of dealings sanctions by the scriptures, may attain salvation. Generally, other scriptures mention that if you want to attain salvation, become a recluse by renouncing mundane materials and live in solitude, because the mundane affairs and spiritual upliftment can't go together. But the Gita declares that whatever place you are, whatever sect you follow, whatever principle you live up to, whatever religion sort, school of thought, whatever religion or school of thought यानी कि उस टाइम पे दूसरे schools of thoughts भी present थे, right. One, caste, ashram, stage of life you follow. By following them, if you act according to the gospel of the Gita, it will lead you to salvation. The supreme truth which recluses and saints attained in solitude by practicing spiritual discipline for years together will be attained in practical worldly life by following the teachings of the Gita, by becoming even minded in success and failure. Performance of one's duty without the desire for fruit is to act according to the gospel of the Gita. What can be more terrible circumstance and activity action than a war? When a man can attain salvation under such a terrible circumstance and activity as a war, then what other terrible circumstance and activity will be there in which he may not attain salvation? According to the Gita, sitting on a seat of loneliness and meditating on God can lead to salvation. In Gita's 6th chapter, 10th to 13th verse. And waging a war can also lead to salvation. इसमें वॉर को बहुत ही एग्रेसिव माना गया है, यानी कि अगर वॉर से आप अटेन कर सकते हैं, टेरिबल सर्कमस्टांस माना गया है. देखिए ये एक कंटेक्चुअल है. आप पे अगर कोई अटैक कर रहा है तो आपको रिप्लाई तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप बिना रिप्लाई जाओगे. अगर आप बिना रिप्लाई जाओगे देन यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ओन डिस्कोर्स. अगर आप पूरी अच्छे तरीके से रिप्लाई देके पूरा रिस्पेक्टफुली you are in the war with your own respect, then in that case it is something that has nothing to do with good or bad. आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. your duty is, जो आपकी ड्यूटी है वो आप फुलफिल करेंगे. अब इसमें for army personnel this is not a terrible circumstance, this is a good circumstance कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो. आप कभी आर्मी पर्सनल्स को देखिएगा, आर्मी पर्सनल्स जब भी युद्ध पे जाते हैं, जब ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, दे वर ऑल जॉयस कि यस हम युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ी हुई है. आर्मी ऑफिशियल्स को भी कहीं ना कहीं ये पाठ पढ़ाए जाते हैं कि यू शुड नॉट फील बैड. कोई अगर कि अहिंसा एंड ऑल ये सब इस जगह वैलिड नहीं होता. अहिंसा कहीं और जगह पे वैलिड हो सकता है, but in the fight, in between the fight, it is not valid at all. Arjun wanted neither heaven nor kingdom. Gita, first chapter 32nd, 35th, and second chapter 8th verse. He wanted to turn away from the sin which would accrue by killing his kith and kin. In Gita's 31st chapter, 36th, 39th, and 45th verse. Therefore, the Lord appears to say, if you don't
covet heaven and kingdom and want to turn away from the sin, discharge your duty of fighting in the war, treating the agreeable and the disagreeable alike. Thus we will incur no sin. Thus you will incur no sin. नैवं पापमं वापस्यसि, यानी कि अगर आप युद्ध लड़ते हैं, युद्ध लड़ने के बाद आप पे कोई सिन नहीं लगेगा, राइट. The reason is that sin is not incurred by waging war, but uneven mindedness, partiality, desire, selfishness, and ego are the causes of sin. It is our duty, dharma, to wage war. Sin is incurred by not performing one's duty and by doing which should not be done. In the preceding verse, the Lord seemed to say to Arjun, if you want to gain knowledge, if you want to gain kingdom and heaven, it is proper for you to perform your duty. While in this verse, he seems to say, if you don't want to gain kingdom and heaven, it is proper for you to discharge your duty by being even minded. It means that it is improper not to discharge one's duty under any circumstances. इसमें इसलिए बोला है कि अगर आप राज्य नहीं भी चाहते हैं, तो अगर आप हार भी जाएंगे, राज्य तो तब भी नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्ति मिल जाए, क्योंकि यू आर डाइंग फाइटिंग द वॉर, फाइटिंग द राइटियस वॉर. ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें सबको मुक्ति मिली थी on both the sides, because everyone was doing their part. यही that is the glory of our schools. एक स्कूल में लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट दोनों होते हैं, एंड दे आर ऑल नेसेसरी, क्योंकि लेफ्टिस्ट रिमाइंड्स द राइटिस्ट के what all things that they might go wrong in, and rightist also remind the leftist what all things they might go wrong in. There is nothing right or wrong in that. It is just the different mindsets that developed in different schools, and it is very necessary. अगर एक स्कूल में, अगर एक कॉलेज में या फिर किसी जगह दो डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस एक साथ नहीं रह रहे हैं या फिर एक साथ वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक. आप अगर डिफरेंट थॉट प्रोसेस से हैं, वेरी वेल, बट यू शुड स्टार्ट आर्गुइंग मतलब संवाद की बात कर रहा हूँ. वाद संवाद से ये होगा कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता लग जाएगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज राइट, राइट. The Lord in the next two verses authorizes Arjun to be guided by even-mindedness, already mentioned in the preceding verse, and he describes its glory. अब उन्होंने ये बोला था कि चाहे आप हारो या जीतो, इस पे ध्यान मत रखो. आपको बस युद्ध लड़ना है, आपको बस युद्ध लड़ने से मतलब होना चाहिए. Till the time you are fighting the righteous war, that means you are doing something good, and whatever happens, that should not be your say. आगे एंड में क्या होता है आपको उसकी चिंता तो नहीं करनी चाहिए. The Lord in the next two verses authorizes Arjun, यानी कि अब वो authoritative वे में ये होगा. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्त तो यया पार्थ कर्मबंध प्रहास्यसि. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्यो युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि. O Parth, Arjun, this attitude of mind has been presented to you from the point of view of Jnana Yoga, discipline of knowledge. Now hear of the same from the point of view of Karma Yoga, the discipline of self-action. Equipped with this state of mind, you will be able to completely shake off the shackles of karma, action. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु. Here the word tu indeed has been used to show the description of the discipline of action is different from discipline of knowledge.
The term Esha has been used for equanimity, which has been described in the preceding verse and which has already been explained in the discipline of knowledge from the 11th to the 30th verse. When a man discriminates between the body and the soul, he gets established in equanimity automatically because it is attachment of the body which is an obstacle in the way of equanimity. So, this ideal of equanimity has already been presented from the point of view of Sankhya Yoga, discipline of knowledge. Now, listen to the discourse of equanimity in the context of Karma Yoga, a discipline of action, Imam. This term has been used to explain how this equanimity is attached by the discipline of action and what its importance is. बुद्ध्या युक्तो याय पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि. Arjun was afraid of the sin that would accrue by waging the war. First chapter 36 to 45th verse. But Lord Krishna says that sin does not accrue by waging the war, as it is your duty, but it accrues by having attachment and aversion. So if you attain equanimity, no sin will accrue, and your duty of waging the war will not lead you to bondage. यानी कि अगर आप कर्म करके किसी एक चीज से अटैच हो ही नहीं रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, when you get attached to anything, या फिर आप मन में बार बार यही सोचे जा रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, you just have to discharge your duty. Once you discharge your duty completely, then only you will not be, it won't lead to any of the bondage. In the 7th verse of this chapter, Arjuna asked Lord Krishna to advise him what was good for him. Hence, Lord Krishna first, he mentions the means of Sankhya Yoga, discipline of knowledge, and then laid great stress on performing the duty and told him that there was nothing more welcome to the Kshatriya than a righteous war. Second chapter 31st verse. Then he told him that no sin would accrue if he had equanimity. Second chapter 38th verse. Now he explains the same equanimity in the context of Karma Yoga, discipline of action. A karma yogi performs action to set an example to the masses, Gita's 3rd chapter's 20th verse, without any selfish motive. By doing so, he attains equanimity easily. Having attained equanimity, he is easily liberated from the bondage of actions. This 39th verse should have been placed after 30th verse, as it rightly belonged there. Because from the 11th verse to the 30th verse, the Lord explained even mindedness from the point of view of discipline of knowledge, and now he describes it from the view of discipline of action. So it seems improper to insert these 80 verses from the 31st to the 38th here. But really, it is not so. The reason is that before describing equanimity in the discipline of action, it is necessary to describe what one ought to do and what one ought not to do. यानी कि पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद की बात है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, राइट. Equanimity in the discipline of actions, it is necessary to describe what one ought to do and what not ought to do. It was Arjun's duty to wage a righteous war. It was not his duty to abandon war, because by doing so he would incur sin. So Lord Krishna in the 8th verse, in these 8 verses, described what Arjun ought to do and what he ought not to do. In 2nd chapter 31st to 38th verse. Then he explained equanimity. It means that first from the 11th verse to the 30th verse, he explained equanimity through as elucidation of the real and the unreal, by mentioning that the real is real and unreal is unreal, none can change these. ये हम कल के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो रियल है अनरियल है ये दोनों कभी भी लिंक नहीं हो सकते हैं. वैसे ही आत्मन की प्रॉपर्टीज हम मुख से या कान से नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो अनरियल हैं. जो आत्मन है दैट इज रियल.
तो वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो वो हमें खुद ही से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. Then he explained equanimity. It means that first, from the 11th verse to the 30th verse, he explained equanimity through as elucidation of the real and the unreal, by mentioning that the real is real and the unreal is unreal, and none can change these. Then, from the 31st verse to the 38th verse, having explained what one ought to do and what one ought not, from the 39th verse, he exhorts Arjun never to desist from his duty, but to always perform duty with even mindedness in success and failure. Appendix: Karma Yoga, discipline of action, is divided into two parts: Kartavya Vijnana, the science of duty, and Yoga Vijnana, the science of equanimity. The Lord, from the 31st verse to the 37th verse, mentioned the signs of duty, in which he described the favorable consequences of discharging the duty and adverse consequences of not discharging the duty. Now, from this verse to the 53rd verse, he mentions the signs of equanimity. The equanimity which the Lord mentioned in the preceding verse cannot be attained both by the discipline of knowledge, can be attained both by the discipline of knowledge and the discipline of action. यानी कि भगवान के आगे इक्वानिमिटी, यानी कि चाहे आप अच्छा काम कर, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो what will be the result, whether you will win or lose, that is equanimity. तो इक्वानिमिटी में अगर आप इसकी जो नॉलेज है वो बहुत डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन ऑफ एक्शन दोनों से आ सकती है. By knowing the discrimination between the body division and the self division and renouncing affinity with the body's division is the discipline of knowledge, while by knowing the duty division and the non duty division, and by renouncing what ought not to be done and discharging one's duty, is the discipline of action. यानी कि जो एक्शन होगा दैट इज द डिसिप्लिन ऑफ एक्शन. ड्यूटी: द मैन बाय फॉलोइंग वन ऑफ द टू डिसिप्लिन शुड अटेन इक्वानिमिटी. कोई भी अगर नॉलेज लेते हैं तो ही वुड अटेन इक्वानिमिटी. द रीजन इज बाय अटेनिंग इक्वानिमिटी ए मैन इज फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एक्शन. वन इज धर्म शास्त्र पूर्व मीमांसा, द स्क्रिप्चर्स ऑफ ड्यूटी, एंड द वन इज मोक्ष शास्त्र उत्तर मीमांसा, द स्क्रिप्चर फॉर सैल्वेशन. ये डेफिनेशन आपको हिस्ट्री ऑफ हिंदू फिलॉसफी में इतनी क्लियरली तो मेंशन नहीं है, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर. वन इज धर्मशास्त्र पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट, द स्क्रिप्चर ऑफ ड्यूटी, एंड वन इज मोक्ष शास्त्र उत्तर मीमांसा, द स्क्रिप्चर फॉर सैल्वेशन. Here, from the 31st verse to the 37th verse, there is description of Dharma Shastra. Dharma Shastra, that is Purv Mimamsa. यानी कि जो अब तक हमने बोला है ये पूर्व मीमांसा था. While from the 39th to the 53rd verse, there is description of Moksha Shastra. मोक्ष शास्त्र उत्तर मीमांसा. तो अब हम उत्तर मीमांसा पढ़ने जाएंगे. 30 फ्रॉम द 39th, ये जो 39th वर्स जो हम पढ़ रहे हैं उससे 53rd वर्स तक. बाय धर्मशास्त्र डिस्चार्जिंग वंस ड्यूटी, धर्मशास्त्र का मतलब डिस्चार्जिंग वंस ड्यूटी, देयर इज बोथ काइंड्स ऑफ प्रोग्रेस. यतोभ्युदया निहृष्ये या सा सिद्धि सा धर्मा. न्याय वैशेषिका फर्स्ट चैप्टर 3rd वर्स एंड सेकेंड चैप्टर 39th वर्स. तो न्याय वैशेषिका से भी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ली गई हैं. न्याय वैशेषिका जो हम पढ़ेंगे न्याय स्कूल ऑफ थॉट, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, राइट. Here, from the 31st verse to the 37th verse, there is description of Dharma Shastra, while from the 39th verse to the 53rd verse, there is description of Moksha Shastra. By Dharma Shastra discharging one's duty, there is both kind of progress, mundane and spiritual. In Dharma Shastra, the discharge of one's duty is important. Either call it dharma or duty, it is one and the same. यानी कि आप उसे धर्म बोले या ड्यूटी बोले, it is one and the same. That is written in Bhagwat Gita. Not to do what ought to be done is non-discharge of duty.
जो होना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, तो दैट इज नॉन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी. And to do what ought not to be done is also non-discharge of duty. जो नहीं करना चाहिए आप वो भी कर रहे हो, that is also non-discharge of duty. Duty is that in which a person, having renounced his desire for pleases others, and which involves his own welfare as well as the welfare of others. By discharging one's duty, yoga, equanimity, is naturally attained. Without discharging one's duty, a man can't attain equanimity. Gita 6 chapter 3rd verse. Having attained equanimity, knowledge of truth is naturally attained, which is the result of both Karma Yoga, the discipline of action, and Jnana Yoga, the discipline of knowledge. Neha brikam manashosti प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमानसोष्टि प्रत्यो वायो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रयाते महतो भयात्. In this path of selfless action, ये हम जो पढ़ रहे हैं मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं, which is the उत्तर मीमांसा, right? ये ध्यान रखिएगा. In this path of selfless action, there is neither loss of effort nor any adverse result. Even a little practice of this discipline, dharma, protects one from greater danger of birth and death. Lord Krishna has explained the importance of disinterested action in the latter part of the 39th and this 40th verse in four ways. One, one becomes free from shackles of action. There is no loss in effort. There is no adverse result. Even a little practice of it, dharma, protects one from great fear. Neha soshti. In this path of disinterested action, there is no loss of attempt, with the partial practice of the yoga, discipline of disinterested action. As its corresponding benefit, the desire to attain equanimity is the beginning of equanimity. Such a beginning never gets wasted because desire for attaining the real is also real. Iha in this means that the world human beings are authorized to attain equanimity. All other bodies, births, are to enjoy worldly pains and pleasures. There is no opportunity for them to do away with attachment and aversion, because pleasures can be enjoyed only by having attachment and aversion. If there are no attachments and aversion, no pleasure can be enjoyed, and such actions will lead to spiritual discipline. Pratyavayo na vidyate. Actions which are performed with a desire for fruits can give adverse results. If there is any error in the pronunciation of incantation or in performing sacrifice, etc., suppose a man performs sacrifice by the birth of a son, but if it is not performed according to scriptures, it might result in the death. For a member of the family, instead of blessing him with a son, if the result is not quite contrary, it may be less harmful, as the son may be born crippled. But one who performs actions without having any desire for fruits becomes equanimous, and so there is no adverse result from his effort. इसमें दो चीजें मेन कही गई हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. वन इज कि क्योंकि हमारी डिजायर टू नो द रियल थिंग इज रियल. जैसे आप सत्य को जानना चाह रहे हैं, आप भगवान को जानना चाह रहे हैं, तो भगवान रियल है, तो वो जो आपकी चाहत है वो भी रियल है. इसका मतलब ये वो ना उसका ना आदि है ना अंत है. इट्स लाइक अगर आप आज भगवान को जानना चाह रहे हैं, नेक्स्ट जन्म में अगर आप ये भगवान को पूरा तरह नहीं जान पाते और आपका नेक्स्ट जन्म होता है, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट बर्थ, इन दैट केस एज वेल जो आपका जितनी जर्नी आपने की थी उतनी सेव रहेगी, ऑटो सेव मोड पे चलता है.
एंड उसके बाद वही उसी जर्नी से आपको नेक्स्ट जन्म में स्टार्ट करनी पड़ेगी. इट इज जस्ट दैट यू आर चेंजिंग द बॉडी, दैट्स इट. प्लस इसमें दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि एक कुछ जो एक्शंस हैं जो आप फ्रूट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि आपने कोई यज्ञ किया, आपको पुत्र नहीं हो रहा था और आपने कोई यज्ञ किया एंड उससे पुत्र मिलेगा, अगर तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें करते हैं तो ठीक है. बट कई बार अगर आपके भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं होता तो पुत्र कई बार क्रिपल्ड हो सकता है, कुछ हो सकता है, राइट. तो इन दैट केस क्योंकि आपकी जो सारा कर्म था वो एक रिजल्ट से अटैच था, देयर वाज एन अटैचमेंट टू द रिजल्ट. प्रॉब्लम बस ये थी. अगर आप अपनी अटैचमेंट रिजल्ट से नहीं रखते हो तो उस केस में देयर इज नो प्रॉब्लम, वेदर इट हैपेंस और डजंट हैपन डजंट मैटर, राइट. पुत्र ही क्यों, ये भी मैं बताता हूँ. पुत्र इसलिए क्योंकि ये माना जाता था और ये कहीं ना कहीं ट्रू भी है दैट ए गाय कैन गो आउटसाइड एंड डील विद ऑल द क्रूकेड पीपल आउटसाइड. फीमेल्स वर लाइक उस टाइम पे भी दे वर लुक्ड अपॉन लाइक द पीपल लाइक हु कैन मेक द फैमिली हैप्पी. तो कई बार पितृ मोह में पितृ मोह में आके दे यूज्ड टू से कि पुत्री तो चली जाएगी तो उससे हमें दुख होगा, तो हमें कंधा देने के लिए भी एक पुत्र चाहिए होगा. तो इसीलिए इसमें ये लिखा है फॉर द एग्जाम्पल ऑफ बॉय लिखा है, ऐसा नहीं है गर्ल. आई ऑल्सो डिजायर कि मेरी शादी और आई हैव अ डॉटर, बट ये उस कंटेक्स्ट में लिखा गया है, राइट. तो इसलिए आपको ये नहीं समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है. इट इज रिटन एज पर द कंटेक्स्ट ओनली, राइट. व्हाट इज एडवर्स रिजल्ट? Unevenness of mind is an adverse result. Attachment and aversion is uneven mindedness. यानी कि अगर कहीं से आप अटैच हैं या एवर्जन है आपसे, तो अगर वो चीज़ नहीं रहती है तो दैट रिलीज टू uneven mindedness, and that unevenness of mind is the adverse result. This uneven mindedness leads to a cycle of birth and death. But when a man becomes equanimous, attachment and aversion are rooted out, and on annihilation of attachment and aversion, there is no unevenness of mind, and therefore any adverse result is out of the question. स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते mahato bhayat. Even a little practice of this discipline of disinterested action, which brings about equanimity, protects one from the great fear of birth and death. So, unlike actions for fruits, which ends after its fruits, it does not perish. Its fruits is not wealth or property, which are perishable. Equanimity, which a striver attains by facing favorable and unfavorable circumstances, get fixed in him and becomes permanent. A devotee, a striver, deviating from the path of yoga, having enjoyed heavenly pleasures for many years and having taken birth in the houses of righteous persons, does not lose knowledge or even mindedness gained in the previous birth. In Gita 6 chapter 40 to 45th verse, because this knowledge or even mindedness is real. इसमें ये भी जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास जब भी सामर्थ्य आ जाता है, जब भी आपके पास पैसा एंड ऑल आ जाता है, देन एट दैट टाइम यू फील कि यू आर द किंग एंड एवरीथिंग, बट यू समहाउ डेविएट फ्रॉम योर पाथ. जब आप अपने पाथ से डेविएट नहीं करते हैं, देन क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, इवन माइंडेडनेस है, दैट रिमेन सेव्ड. जैसे मैंने बोला था कंट्रोल एस रहता है और वो कंट्रोल एस आपके नेक्स्ट जन्म तक भी जाता है, बिकॉज इट इज रियल, इट इज इवन माइंडेडनेस. धर्म, ड्यूटी is used in two senses. Charity is kindness in giving help, money, food, clothes, etc. to the poor and suffering people. Discharging one's duty according to the ordinance of scriptures by performing one's duty without desiring for fruits, one develops equanimity automatically because it is axiomatic. Therefore, here equanimity has been called dharma, duty. Something noteworthy about equanimity. Some people opine constant remembrance of God is not useful
यानी कि कुछ लोगों का ओपिनियन है constant remembrance of God is not useful unless there is concentration of mind. But the gospel of the Gita does not attach much importance to this opinion. It attaches more importance to equanimity. यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसका फल से आपको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, राइट? According to the Gita, a striver who has attained equanimity is an exalted soul. Even when a man is imbued with all qualities, if he does not gain equanimity according to the Gita, he cannot be called a perfect soul. This equanimity is of two kinds, of the mind and of the soul, of the self. The Lord pervades everywhere equally. One who gets oneself established in Him gains victory over the world and is liberated. But the equanimity of self can be known by equanimity of the mind. Gita's 5th chapter 19th verse. Equanimity of the mind consists in remaining even minded in success and failure. Gita's 2nd chapter 48th verse. Such a person remains even minded in praise and reproach, success and failure, profit and loss, pleasure and pain, etc. Gita's 5th chapter, 2nd verse, 20th verse. This sort of equanimity never perishes and it results in nothing but salvation. Whatever virtuous actions such as penance, charity, and pilgrimage, etc., are performed by a man, this perishes after giving fruits. But equanimity does not perish and it leads a man to salvation of God realization. Gita's 5th chapter, 3rd verse. While concentration of mind may lead him to accomplishments, siddhis, but not salvation. यानी कि अगर आप कोई कार्य करते हैं किसी फल हेतु तो आपको फल मिलेगा. अगर आप जैसे दान पुण्य करते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स तो उसका सिर्फ आपको फल ही मिलेगा एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट यू वुड गेट. देयर इज नथिंग लाइक कि आपको उससे मुक्ति मिलेगी. मुक्ति आपको इक्वानिमिटी से मिलेगी. अब दोनों सेम चीजें हो सकती हैं बट उसमें सोच का डिफरेंस है. अगर आप जस्ट एक चीज देते हैं किसी को एंड दान में देते हैं कुछ देते हैं तो अगर आप अपने किसी पाप को काटने के लिए कर रहे हैं, अगर आप किसी धन धान्य किसी चीज से कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको फल ही मिलेगा. लेकिन अगर आप उसके रिजल्ट से अटैच ही नहीं होते हैं कि ठीक है किसी ने बोला है हमें दान करना, दान कर दिया, आपके मन में नहीं सोचा कि दान आप कर क्यों रहे हो, उससे क्या होगा, 100 सवाल आएंगे, वो नहीं आने चाहिए. अगर वो नहीं आए और अगर आपने जो भी दान पुण्य किया, जो भी अपना कार्य किया, वो आपने अपना कार्य पूर्ण कुशलता से किया, पूर्ण सत्यनिष्ठा से किया, उस सत्यनिष्ठा से अगर आप बिना किसी रिजल्ट से अटैच हुए अगर आप कर रहे हैं देन यू विल अटेन सैल्वेशन. नहीं तो अगर आप सिर्फ फ्रूट को देख के कर रहे हैं कि आपको उसका फल क्या मिलेगा, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ सिद्धियां या फिर फ्रूट्स ही प्राप्त होंगे. Appendix. The Lord has mentioned the glory of equanimity in 4 ways in the 39th and the 40th verses. Karma bandham prahasyasi. By equanimity, a man shakes off the shackles of karma, action. Neha bhikramana sosti. There is no loss of effort. Pratyavayo na vidyate. There is no adverse result of this effort. स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते mahato bhat. Even a little practice of this discipline, dharma, protects one from the great danger of birth and death. Though in the first point the three remaining points are included, yet there is a little difference in them. As first, the Lord first in the normal way declares that by equanimity a man shakes off the shackles of karma, action. The reason of bondage is the attachment to the modes, viz. It is his assumed affinity with Prakriti, matter, and its evolutes. Gita 13 chapter 21st verse. In equanimity there is no affinity with Prakriti and its evolutes. Therefore the man is freed from the shackles, bondage of action. As in the world many virtuous and skillful actions are done, but those actions don't bind us because we have no relationship with them. Similarly, the even-minded person has no relationship with the actions done by his body. यानी कि अगर एक पर्सन का दिमाग में ही है कि
whatever actions he is doing, उसका result से कोई लेना देना नहीं है, तो all the actions done by his body उसका कोई relationship होगा ही नहीं in this case, in the good way. If equanimity merely begins with there is an aim of attainment equanimity, there is inquisitiveness to attain it, then this beginning is not destroyed. The reason is that the aim to attain the imperishable is also imperishable, while the aim to gain the perishable is also perishable. The aim to gain the perishable leads to destruction, fall, while the aim to attain equanimity leads to salvation. जिज्ञासुरापि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते. गीता 6th chapter 44th verse. अब जैसे आप ये जैसे आपने आज कुछ चीज लेनी है, राइट, वो चीज लेने की जो इच्छा है वो पूरी जिंदगी नहीं रह सकती. आपने ले ली, मिली ठीक, नहीं मिली कोई बात नहीं, तो दैट इज एन अनरियल वर्ल्ड. Real world, when you are attaining to have God, when you are attaining to have salvation, उस केस में if you are attaining to have salvation and if you want to attain God, in that case वो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, एंड जितनी भी आपकी प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी. दैट प्रोग्रेस विल स्टिल रिमेन इन इट्स परफेक्ट स्टेट, राइट. There is no adverse results in this equanimity. If there is any error in pronouncing the sacred text in the performance of action, which are done with a desire for fruits, the results of those actions can be adverse. There is a mythological story that Twashta performed a religious sacrifice in order to get a son who would kill Indra. In that sacrifice, the sages performed the sacrifice with the sacred text Indra Sutram Vivardhasva. The word Indra Shatru is there in Shashti Tat Purusha, compound word. It means Indra's enemy. And if there is Bahuvrihi, compound word, it means whose enemy is Indra. By the difference of samasa, compound word, there is difference in sound. Therefore, in Shashti Tat Purusha, compound word, the word Indra Shatrus, last letter, through, will be pronounced with Uddata sound, while in Bahuvrihi compound word, the word in the Shatru, first letter E, will be pronounced with Uddata sound. In the Shatru. The aim of the sages was to do the anti-yuddata pronunciation of the word in the Shatru, but they did Adyodhata pronunciation. So because of the difference in the sound in the pronunciation of the sacred text, there was an adverse result, and thus the Indra became the killer of Vritrasur, Twashta's son. Therefore it is said, Mantrohina Svarato Varnato Va Mithya Prayukto Na Tamarthamaha Savagvajro Yajamanam Hinashti Yathendra Shatru Svarato Paradhat. पाणिनि शिक्षा में. अब इसमें आप बोलेंगे कि अगर मंत्रों के उच्चारण से इतना हो जाता है तो आप तो संस्कृत इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. द थिंग इज, मेरा इसमें जो एम है, मोटिव है, वो किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना वो है ही नहीं. इसमें मेरा जो एम है खुद सीखना है और दूसरों को सिखाना है. यूट्यूब पे लाइव इसलिए है कि दूसरे भी इसी ज्ञान को ले पाएँ, इसी ज्ञान को सीख पाएँ और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में अमल कर पाएँ. दैट्स इट. तो इसमें मैं एग्जैक्ट कोई, तभी इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ को एग्जैक्ट नहीं आप कर पाएंगे जैसा लिखा गया, तो उसका विपरीत भी होगा. वैसे ही इन दिस केस मेरा इससे कोई रिजल्ट अटैच नहीं है. देयर इज नो रिजल्ट अटैच टू दिस लाइफ. इट इज़ श्रीमद् भगवद गीता, ये हमारा डिस्कोर्स है, एंड टिल द टाइम माँ सरस्वती चाहेंगे या महादेव चाहेंगे ये चलता रहेगा, राइट. But if there is equanimity in life,
and an error is committed, and if there is a slip of carefulness, the action does not give adverse results, bondage. For example, if a paid servant while lighting a lantern in the dark drops it and breaks it, we are angry with him. But if our friend who never wants anything from us drops the lantern and it is broken, we don't get angry but ask him not to mind it. It is as it matters little. Therefore, he who performs action with the desire for fruits may have adverse results for his actions. But how can the result of the actions of the person who doesn't covet any fruit he adverse? It can't be. यानी कि इसमें ये बोला गया कि जैसे अगर आप कोई लैंटर्न है, योर फ्रेंड हु, अगर आपका कोई चीज़ है वो टूट जाती है तो आप किसी से कई बार बहुत गुस्सा हो जाते हो, लेकिन अगर वही चीज़ टूटती है, अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या कुछ है, तो आप नहीं होते हो। अब आज कलयुग में ये भी देखा गया है कि अगर गृहस्थ में कोई नई स्त्री आती है, पर स्त्री जैसे बोल सकते हैं कि आप वाइफ लेके आए हैं, मेनी टाइम्स माता जी से टूट जाएंगी तो बड़ा गुस्सा आएगा, वही बीवी से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राइट, ये होता है कई बार, ये कलयुग का असर है। होना कुछ भी नहीं चाहिए। जिससे भी गिरा है, आप किसी से भी कोई जार गिरा है, जग गिरा है, उसकी कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है उस जग से। इसलिए हमें इक्वानिमिटी रहना चाहिए। वी शुड बी सेम इन ऑल थ्रू आउट, राइट। Even a little equanimity protects one from the great danger of birth and death, which it results in salvation, as actions done with an interested motive perish after bearing fruits. In that way, even a little equanimity does not perish after bearing fruit, but it only leads to salvation. If virtuous actions such as religious sacrifice, charity, and penance, etc., are performed with a desire for fruits, their result is perishable, gain of money, wealth, and heaven, etc. And if they are performed without the desired fruits, etc., their results is imperishable, that is salvation. अगर आप कोई कार्य सत्य निष्ठा से तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होते हैं, तो आपको सैल्वेशन मिलेगा। यानी कि आपका जो फ्रूट होगा, दैट इज ऑल्सो imperishable, which is salvation. Thus, virtuous actions such as sacrifice, charity, and penance, etc., can bear two types of fruits, but the fruit of equanimity is only salvation. यानी कि टू टाइप ऑफ फ्रूट, जैसे एग्जाम्पल में बताया कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल. As a traveler while traveling stops on the way or sleep, he has not to go back to the place from where he started his journey, but he has covered the distance up to the place where he stops and sleeps. Similarly, in such equanimity is attained in life that never perishes. स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Even a little feeling of disinterest is true, while fear, even being great, is untrue. As for a bundle of cotton, a lot of fire is not required. The cotton may be one bundle or 100 bundles. A matchstick is enough to burn. When one matchstick is applied to the cotton itself becomes fire and helps in burning the remaining cotton. In the same way, detachment is fire and the world is cotton. Being detached from the world itself perishes, because the world in fact has no existence at the root, so one can't be attached to it. The least renunciation is real and the biggest action is unreal. The action ends while renunciation is endless. Therefore, actions such as sacrifice, charity, and penance, etc., perishes after giving fruit. Gita in 8th chapter 28th verse, but renunciation of the fruits of actions never perishes. Tyajachanti ranantaram. Gita's 12th chapter 12th verse. By renouncing the egoistic notion only,
infinite universes are announced because this sense of ego has sustained the entire universe. Gita 7 chapter 5th verse. There may be a big heap of grass. Can't it face fire? It may be very dark. Can't it face light? If there is a fight between darkness and light, will darkness win? Similarly, if there is a fight between the ignorance and knowledge, will ignorance win? Can the greatest fear face fearlessness? Equanimity, even if it is a little, it is a little, is incomplete, and fear, even if great, is incomplete. A little equanimity is great because it is true, and the great fear is little without existence because it is untrue. What is the import of calling equanimity or the feeling of disinterestedness a little? The feeling of disinterestedness is great, but we understand and experience it as it a little. So it has been called a little. In fact, our understanding is a little. Equanimity is not a little. Our view has not grasped it fully. So there is defect in our view, not in equanimity. Similarly, we have valued the unreal more. It does not mean that the unreal is great, but value accorded by us is great. Therefore, if we value the real more, the real will become great, whereas the value will be realized. And if we don't value the unreal will become a little. In fact, the unreal may be great or a little. It has no existence. Nashato vidyate bhava. And the real may be great or a little. Its experience is even present. Na bhavo vidyate sata. Therefore, in Upanishads, the supreme soul has been called smaller than the molecule and the biggest of all, aniranyan mahato mahyan. Katha first 1 by 2 by 20 and Shwetara, and third chapter second 20th verse. यानी कि इसमें कई और चीज़ें बताई गई हैं टुवर्ड्स अ व्यू पॉइंट. अब क्योंकि हमारी दृष्टि जो है एक सीमित दृष्टि होती है, असीमित नहीं होती है. हम वही देख पाते हैं जो हमारे सामने होती है. चार वाक्य ट्रेडिशन से आपने सीखा है, राइट. तो वैसे ही हम इक्वानिमिटी को स्मॉल मानते, छोटा मानते, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हमें इसे अगर दूर दृष्टि से देखा जाए, अगर हम उसे इक्वानिमिटी से देखा जाए, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग. इसमें यही लिखा गया है कि जो आपकी दृष्टि है, जो आप जिस व्यू पॉइंट से आप देख रहे हो, काफ़ी छोटा है. अगर हम उसे बड़ा करें तो हम इस इक्वानिमिटी को काफ़ी हद तक लेके जा सकते हैं, राइट. In the next verse, Lord Krishna explains to Arjun how to attain equanimity. कि आप इक्वानिमिटी समता कैसे ला सकते हैं, यानी कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आप उसमें सेम कैसे रह सकते हैं. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम. व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो Vyavasayinam. A joy of the Kurus in this blessed path. The intellect is determinate and concentrated, whereas the intellect of the undecided, infirm, is scattered in many directions and is endlessly diverse. Vyavasayatmika buddhirekeha kurunandana. To a seeker of God realization, the intellect is determinate and single pointed, whereas he has only one decision, and that is to attain equanimity. In the form of God realization, attachment to the world is the main obstacle to this attainment of equanimity, and that can be removed through determinate intellect. Why is determinate intellect one? The reason is that in it there is renunciation of desire for worldly objects, etc.
The renunciation of desire is singular, whether it pertains to wealth and riches or honor and praise. But there are objects of different types, and a person wants to acquire these. Just as there are different kinds of objects, such as different kinds of sweets, in the same way, there are endless desires for acquiring numerous objects of various types in various ways. Therefore, the desirous person cannot have one intellect. In the discipline of action in this verse, and in the discipline of devotion in ninth verse 30th chapter, there is mention of intellect, which is determinate and single pointed, but it is not so in the discipline of knowledge. The reason is that in the discipline of knowledge one comes to know the self first, and this and then his intellect becomes determinate and pointed, while in the discipline of action as well as devotion, it is the determinate intellect which comes first, and then it is followed by self realization. Therefore, in the discipline of knowledge, there is importance of knowledge, while in the discipline of devotion and action, there is importance of single minded pursuit. बहुशाखा ह्यानन्तश्च बुद्धयो व्यावासियनम्. The infirm in mind, being desire-ridden, clings to pleasure and prosperity, and so the intellect of such persons grow endlessly. For example, they may have a desire to get a son. The means adopted by fulfillment of other desires, such as medicine, incantation, oblation, and desire of a saint, are branches of the same desire. Similarly, a man wants to get money. Of this is one desire, intellect, and to get it through business, service, theft, robbery, cheating, etc., are many branches of that intellect. Such a man of endless desires, having many branches, cannot even take decision about God realization. Appendix. The real aim is only one. Unless a man has a singular aim, he has endless aims, and there are numerous branches of each aim. He has endless desires, and the means for the fulfillment of each desire are also many. इसका मतलब ये है, इसका शायद मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया था कि अगर आप एक भगवान में मन लगाते हैं आस्तिक दर्शनाज में, तो आपका एम सेम रहता है, दैट यू हैव टू रियलाइज द ट्रुथ, दैट्स इट. इसका और कोई एम नहीं रहता. वैसे ही अगर आप इसमें गॉड रियलाइजेशन को ही या फिर इक्वानिमिटी को ही रखते हैं, तो पहली बात आपका एम सेम है, दैट यू हैव टू रियलाइज द ट्रुथ. एंड इक्वानिमिटी, क्या आप चाहे जो सोल्यूशन है का जो रिजल्ट है, जो भी एक्शन है उसका रिजल्ट है, वो सही आए या गलत आए, यानी कि आपके इवन माइंडेडनेस के अकॉर्डिंग आए, अनइवन माइंडेडनेस के अकॉर्डिंग आए, यू हैव टू रिमेन द सेम. अनइवन माइंडेडनेस ये होता है कि आप सिर्फ एक ही वे में सोच रहे हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जैसे ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, वैसा. अगर आप अगर इवन माइंडेडनेस होते हैं तो आपको ख्याली पुलाव नहीं, जो होगा देखा जाएगा. अभी जो है वी हैव टू डील विद द प्रेजेंट, आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा. विल लुक इनटू इट इन द लेटर स्टेजेस. The way of the infirm in mind worldly people have been described in the next 3 verses. Yamimam pushpitam vacham pravadantya vipashyatam vedvadarta parth nanyadashtiti vadin कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति यामीमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदावादरता पार्थ नान्य दाष्टति वादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति. Arjun, those who are obsessed by desires,
who look upon heaven as the supreme goal and argue that there is nothing beyond heaven and pleasures, and who are devoted to the letter of the Vedas are unwise. They make this type of flowery speeches, recommended many acts of various kinds for the attainment of pleasure and prosperity, and with rebirth as their fruits. Kamatmana, desire ridden are those whose sole aim in life is to hunt after enjoyment. They think that it is nothing but desire which inspires a man of action, and without it, a man is stone dead. Moreover, they identify themselves with desires. But the fact is that a man himself is a fragment of God and thus is eternal, while desires are fleeting and these increase and decrease. The self and desire are totally distinct, but desire ridden people never realize this distinction, and it is only out of delusion that they identify themselves the desire. Swarga para. They look upon heaven and its pleasures as the supreme goal. All their efforts are directed towards the base end. Here, the term Swargapara refers to such men who have faith and belief in heaven, etc., as described in the Vedas and scriptures. Veda Rata Parth Nanyadashtiti Vidina. They are interested in Vedas only for the sake of ritualistic contents, which deal with unearthly and heavenly pleasures. The aim of this life is to enjoy celestial pleasures here and hereafter rather than to attain God realization or emancipation. Yamimam pushpitam vacham pravadantya vipaschita. They cannot discriminate between the real and the unreal, the perishable and the imperishable. Such unwise persons utter flowery words of the Vedas, which describe and recommend various acts for the attainment of pleasure and prosperity. Here, the word pushpitam has been used to show that such speech is just flowery with an attractive appearance without bearing any permanent fruits. Satisfaction comes out of fruit only, not from flowers and leaves. इसमें बोला गया है जो लोग वर्ल्डली प्लेजर्स लेते हैं, जो लोग वर्ल्डली चीज़ों पे आधारित रहते हैं, जो वर्ल्डली आइटम्स लेते हैं, इन दोज केसेस ओनली उनको रियल और अनरियल में फ़र्क नहीं पता होता. अब रियल और अनरियल में फ़र्क का मतलब ये भी है कि आप अटैच नहीं हो रहे हो किसी भी चीज़ से. Any activity you are doing right here for anyone, it is unreal actually. Aap real is only for the God. Anything which you are doing real is only for the God in आस्तिक दर्शनास. वैसे ही जिनको भोग विलास एंड ऑल ये सब होता है उनके, तो वो स्क्रिप्चर्स को भी बड़ी बढ़ाई करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि आपको इस स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए फॉर हैविंग प्लेजर एंड प्रोस्पेरिटी. टेक्निकली ये नहीं होता. प्लेजर एंड प्रोस्पेरिटी आ जाती है अगर आपके कर्मों में लिखा होगा. तो अगर आपके पूर्व कर्म के फल आगे आने हैं तो वो आ जाएगा. लेकिन स्क्रिप्चर्स को तभी पढ़ना चाहिए अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं, अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं, अगर आप मुक्ति लेना चाहते हैं. राइट. तो ये इसमें बोला गया. राइट. जन्म कर्म फल प्रदाम. That flowery way, instead of giving any permanent and eternal fruit, gives the fruits which prolong the wheel of birth. In language, flowery importance is attached to pleasure, and attachment to pleasure is the cause of birth. यानी कि अगर हम attached हैं pleasure से या फिर we are attached to the fruits, that is the cause of birth, and technically that is the cause of death as well. Death and birth का जो cycle है वो. डेथ के बाद अगर मुक्ति मिल गई यानी कि यू डेंट हैड एनी एफिनिटी विद समथिंग. राइट. क्रिया विशेष बहुलम भोगैश्वर्य गतिम प्रति. That flowery utterance deals with the number of rituals for the attainment of pleasure and prosperity. In these rituals, there is abundance of different kinds of rites involving various methods, actions, and objects, and much strenuous physical labor.
एंड गीता's 13th chapter 21st verse में भी ये बोला गया है, the flowery utterance deals with a number of rituals for the attainment of pleasure and prosperity. यानी कि हम रिजल्ट से पहले ही उससे अटैच कर रहे हैं कि रिजल्ट ये होगा कि फॉर द pleasure and prosperity. In these rituals there is abundance of different kinds of rites involving various methods, actions, objects and much strenuous physical labor. यानी कि इसमें फिजिकल लेबर भी है, मेथड्स, एक्शंस, ये सारी चीज़ें भी हैं. अगर जैसे मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, इसमें मुझे पता है कि जितना भगवान चाहेंगी, जितनी सरस्वती माँ चाहेगी, ये आगे चलेगा, जब जब चलेगा. मेरा काम ये है कि मैं रोज़ सुबह आ रहा हूँ. संडे को थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि द थिंग इज संडे को खाना सुबह सुबह 7:30 बजे मिलता है. एंड उसके बाद यहाँ जब आता हूँ रिकॉर्डिंग करने, तो यहाँ पे आता नहीं है. यहाँ पे तभी आता है इन द वीकडेज और द वर्किंग डेज, राइट. भोगेश्वर प्रसक्तानां त्यापृहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां ताया प्रहृतेस्य चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समधो न विद्यते. Those whose minds are carried away by such flowery words, who are attracted towards pleasure and who are deeply attached to pleasure and prosperity, cannot attain the determinate intellect concentrated in God. Taya paharta chetasam, their mind are carried away by such flowery language that there is great pleasure in heaven. There are celestial damsels, a blissful garden, and there is nectar, etc. Bhogashvarya prashaktanam, pleasures of five senses, sound, touch, color, taste, smell, color of the body, and desire for respect and praise are bhoga. The worldly enjoyment, accumulation of money and material to enjoy those worldly pleasure is called Ashwarya, prosperity. Those who cling to pleasure and prosperity are called Bhogashwarya Prashaktanam. Such people are called dominical, asura. The people who possessing the mode of passion who are being described here have been called people possessing dominical traits in the 16th chapter by the Lord, in 16th chapter 11th and 16th verse, right. आसुरी प्रवृत्ति बोला जाता है जो प्लेजर एंड प्रोस्पेरिटी से क्लिंग होते हैं. आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई आपके आगे कोई बोलता है कि वो ब्राह्मण एंड दैट ही इज दैट मच अटैच्ड टू द प्लेजर एंड प्रोस्पेरिटी या फिर वर्ल्डली प्लेजर्स, देन दैट इज डोमिनिकल, कि आसुरी प्रवृत्ति का बन जाता है वो, क्योंकि वो ज्यादा विनाश करेगा. क्योंकि ब्राह्मण्स आर वेरी मच इंटेलिजेंट, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये हम वर्ण पढ़ चुके हैं 9th चैप्टर में, हम दोबारा पढ़ेंगे इस डिस्कोर्स में. तो दैट इज मच मोर पेनफुल. उस केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखिए कि जो अपने आप को बोल रहे हैं डिफरेंट वर्ग के, उनके मन में क्या है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं, राइट. ये सारी चीजें आपको देखनी अनिवार्य हो जाती हैं. व्यवसात्मिका इन संस्कृत असु stands for life breath, and he who wants to maintain life breath is an asura. Vyavasayatmika buddhi samadho na vidyate. Such people who instinctively cling to pleasure and prosperity cannot attain the determinate intellect to realize God, because their intellect has become impure. Similarly, the people who have pride in for their being learned by acquiring the worldly art of science or knowledge, etc., cannot attain the determinate intellect decision to realize God. Something not worthy. All gracious God, by His grace, has bestowed discrimination upon human beings, so that they may attain God or salvation. But human beings, giving a cold shoulder to this discrimination, cling to pleasure like birds and animals. Yani ki human beings is the only being that can attain salvation.
नो वन एल्स कैन एक्चुअली। हम अपनी बुद्धि और विवेक से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्डली प्लेजर्स, जैसे कोई भी वर्ल्डली प्लेजर हो गया, वो हम भोग विलास के चक्कर में पड़े रहते हैं. दैट इज गिविंग अ कोल्ड शोल्डर टू द गॉड हु हैज गिवन अस सो मच टू अटेन salvation. They forget that enjoyment of pleasure is not the goal of human life, but its supreme object in the attainment of perfection. And all the circumstances, whether favorable or unfavorable, they are placed in are means or to attain perfection, God realization. So they cannot have the sole desire for God realization. The fact is that worldly pleasures and objects are not a real obstacle to God realization, but attachment to these is the main hindrance. So long as this attachment continues not to talk of God realization, the people cannot even make up their minds to attain God, because their minds are drawn away by worldly pleasures and prosperity, etc. यानी कि आप गॉड को मान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके जो मन है वो संसारिक चीज़ों पे, वस्तुओं पे, काम में ऐसा लगा रहेगा. जैसे कई बार आप देखते हैं कि ये फोर्स है, दैट इज जैसे आप हमेशा नीचे ही बड़ा इजीली गिरेंगे, ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है. जैसे अगर किसी को बोला जाए चलो भागवत सप्ताह रखते हैं, इस हफ्ते सारे आएंगे, इक्का दुक्का लोग आएगा. लेकिन अगर हम कहेंगे ड्रंकर्ड सप्ताह रखते हैं, ड्रिंक्स फ्री, ड्रिंक्स ऑन हाउस फॉर एवरी वीक, पूरा समाज इकट्ठा होकर वहीं आ जाएगा. जिसने अभी ड्रिंक्स ट्राई भी नहीं की है, अल्कोहल ट्राई भी नहीं किया है, वो भी ट्राई करने पहुंच जाएगा, क्योंकि फ्री है ना. भागवत सप्ताह भी फ्री था, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि उससे मुक्ति मिलेगी. इट इज डिफिकल्ट टू गेट अप इन दैट लेवल. लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं हम ड्रिंक्स देंगे, अल्कोहल देंगे, तो उस केस में काफी लोग इकट्ठे हो ही जाएंगे, राइट. If there is an obstacle to the attainment of salvation, it is the desire of pleasure and it is the desire of pleasure and prosperity, accumulation of wealth. As an ensnarled fish can't move ahead, similarly a man entangled in pleasure and prosperity can't move towards God. Not only this, but the man attached to pleasure and prosperity can't even have the determinate intellect to realize God. यानी कि उसके पास intellect भी नहीं होगा to realize God. He who regards the world as true, to him karma yoga will quickly lead to self-realization. A karma yogi serves the world by discharging his duty, whereas he does every action for the welfare of others in the disinterested manner. He feels happy with the happiness of others and is sad moved with the sadness of others. By feeling happy, seeing others happy, his desire for pleasure is wiped out. And by being moved by the suffering of others, his desire for prosperity, accumulation is also wiped out. यानी कि अगर आप दूसरों की खुशी में खुशी और दुख में दुख आ रहे हैं, तो आपका whatever it is there, it is wiped out. आपके अंदर के जो काम वासना है वो भी चली जाती हैं. हैप्पी टू हैप्पी मतलब आपकी डिजायर फॉर प्लेजर इज वाइप्ड आउट. अगर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जब आप दूसरों को दुखी देखते हैं, दुखी क्यों होता है? दुखी इसलिए होता है कि जो उनके पास थी वो अब नहीं है. तो आपका जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा या फिर प्रोस्पेरिटी होगा या फिर कुछ भी एक्यूमुलेट करने का जो भाव होगा वो चला जाएगा. In fact, the real service is rendered by a person who has totally renounced the desire for pleasure and prosperity. Otherwise, the service is fake. But if the aim is real for the welfare of others, the fake service also turns into real service. यानी कि अगर कोई जस्ट धोखे से भी कर रहा है, जैसे मैं पहले बताया था ना कि अगर कोई भक्ति भाव में डूबने का नाटक भी कर रहा है, तो उसे नाटक करने देना चाहिए, क्योंकि उस केस में, क्योंकि वो रियल को पाने का नाटक कर रहा है, तो वो उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी रियल हो जाएंगी, और द फेक विल आल्सो बिकम रियल सर्विस. जो फेक सर्विस है वो भी एक रियल सर्विस बन जाएगी. लिंक टू कंफर्म समथिंग, इट इज नेसेसरी दैट वन शुड व्यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ मैटर. In the previous three verses, there is the description of the infirm in mind who are obsessed by desires.
Now, Lord Krishna inspires Arjun to attain the ideal of being established in the eternal external God, transcending the three gunas, attributes, and being free from all desires. त्रैगुण्य विश्यो वेद निरस्त्र गुणयो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यस्तवस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवन. O Arjun, the Vedas deal with the three gunas, attributes, and the evolutes. Be free from those attributes. Rise above the polarity of opposites. Remain balanced. Be unconcerned about the meeting of wants and preservation of what has been already attained and get established in the self. Tragunya Vishya Veda. Here the reference is to the ritualistic portion of the Vedas, which deal with the three gunas, attributes, and their evolutes in the form of worldly and heavenly enjoyment. The purpose is not to censure the Vedas, but to glorify the selfless spirit. The reference to a diamond, a piece of glass, is compared, the aim is to eulogize the diamond rather than to censure glass. The Vedas do not only deal with means to satisfy desires of worldly minded people, but they also contain sublime and elevating ideas on God and the means to realize Him. यानी कि जितने भी वेदास हैं हम वेदास को कई बार किसी फल से फल के अकॉर्डिंग देखते हैं. हम वेदास को ये देखते हैं बड़े ही के फल चाहिए हो तभी हम पढ़ सकते हैं. नहीं, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, हम भगवान की क्या थ्योरीज हैं एंड हाउ कैन वी अटेन इक्वानिमिटी. निष्त्रैगुण्यो भावार्जुना. O Arjun, be free from the evolutes of these attributes, viz. Be free from worldly enjoyment as well as means of attaining such enjoyment. Nirdvandva. For the striver to transcend the worldly enjoyment, it is inevitable to be free from the pairs of opposites, such as attachment and aversion, etc. Because these are his real enemies and are the stumbling blocks in the spiritual progress. Gita's 3rd chapter 34th verse. यानी कि अगर हम अटैचमेंट और अवर्जन रखेंगे, दैट आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसमें स्टम्बलिंग ब्लॉक्स रहेंगे. अब जैसे ये जो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ये जो भगवत गीता मैं पढ़ रहा हूँ बार, इट इज द सेकंड टाइम आई एम रीडिंग द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले मुझे लगा कि एक बार अच्छे से सत्यनिष्ठा से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे दोबारा जाएंगे, विच स्टार्ट्स विद द 9th चैप्टर. तो ये जो प्रोग्रेस है मेरी, ये अगर मेरा देहांत भी हो जाएगा तो अगले जन्म में कंटिन्यू हो जाएगा. अगले जन्म पे आई विल गो टू सर्टेन सिनेरियोस जिसमें मेरा जन्म वहीं उस कंडीशन में होगा और आई विल स्टार्ट माय दिस थिंग. लेकिन क्योंकि अगर मेरे अंदर अभी भी थोड़े से अटैचमेंट्स हैं, वर्जन्स हैं, वो होते हैं, वो हैं, अभी भी हैं. मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ. मैं भी आप ही के बीच में से आया हूँ जो यूट्यूब की क्लासेस लेता हूँ, राइट. Here Lord Krishna orders Arjun to rise above the pairs of opposites, because through their deluding nature human beings are enveloped in utter ignorance. Gita's 7th chapter 27th verse. When a striver gets rid of this delusion, he can worship him and with a firm resolve. Gita 7th chapter 28th verse. यानी कि वो delusion से या फिर अपने नेचर से या फिर जो प्रकृति से अपने आप को सेपरेट तभी महसूस कर पाएगा अगर वो फर्म रहे टू वर्शिप हिम इन अ फर्म रिजॉल्व, अगर वो कंठस्थ रहे. बाय ट्रांसेंडिंग दीज पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स ही इज इजीली फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेजेस. यानी कि अगर हम इन ऑपोजिट से, जिसमें ऑपोजिट्स क्या थे, अटैचमेंट एंड अवर्जन, अटैचमेंट और अवर्जन से जैसे ही हम मुक्ति पा लेंगे, वी विल इजीली गेट फ्री फ्रॉम बॉन्डेज. दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन 5th chapter 3rd verse.
one becomes undeluded, यानी कि हम ब्रह्म जो है वो टूट जाता है. And he is not bound in 4 chapters 22nd verse. So the Lord wants him to be free from the pairs of opposites. Another aspect is that if a person develops attachment for one person or a thing, he is sure to develop aversion to the other person or things. By having such attachments to the world, an aspirant turns indifferent to God. This indifference is a sort of aversion to God. But if one develops true devotion to God without having any attachment or aversion to the world, he develops total disinclination for it. This total disinclination has 3 stages. In the first stage, the aspirant has no hatred for unfavorable circumstances, but there is upeksha, neglect. In the second stage, there is udasinta, unconcernedness. In the third stage, there is total disinclination. In the last stage, total disinclination, attachment and aversion are totally wiped out. In this process, if this process is considered minutely, we find that in apeksha, there remains impression of attachment and aversion. In udasinta, the feelings of attachment and aversion remain, while in total disinclination, there are neither impressions nor feelings of attachment and aversion. In this state, attachment and aversions are totally wiped out. पहले neglect रहता है, फिर उदासीनता रहती है, फाइनल टोटल डिसिंक्लिनेशन हो जाता है. नित्य सत्वस्था. The advice is to rise above the pairs of opposites and to get established in the omnipresent and everlasting God. यानी कि हमारा एम जो है वो is to rise above the opposites and to establish yourself in the omnipresent and everlasting God. Remember, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आस्तिक दर्शनों पे बिलीव करेगा. इसके कुछ पार्ट्स नास्तिक दर्शनास में भी हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द सीरीज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी. निर्योगक्षेम. Do not have the desire even for the provision of the means required, yoga, and the preservation of what has already been attained. Because I provide for and preserve all for those who have exclusion, devotion for me. Yoga means providing unacquired things, and Shema means preservation of the things procured. Yoga कुछ चीज जो हम acquire अनएक्वायर्ड है लेकिन वी आर एक्वायरिंग, यानी कि इसको आप योग फिलॉसफी से भी रिलेट कर पाएंगे, बट दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. कुछ कुछ चीज़ें सेम है. तो इस केस में संस्कृत में खास बात ये रहती है कि एक वर्ड किस श्रेणी में यूज हुआ है, एक वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, उसी के बेसिस पे आपको डेफिनेशन बतानी है, राइट? Though here it is the context of discipline of disinterested action, yet it seems proper to take it as the discipline of devotion, because Lord Krishna time and again orders Arjun to be his devotee, and he also accepts him as his devotee. In 4th chapter 3rd verse, he also takes the responsibility of provision and protection. Niryogakshema. Do not have the desire even for the provision of the means required, yoga, and the preservation of what has already been attained. यानी कि कुछ चीज़ें जैसे गद्दी गद्दी का रहता है कि हमने गद्दी ले ली तो हम उसे प्रिजर्व रखेंगे. अरे यार कोई नेक्स्ट बंदा आ जाएगा आपसे भी अच्छा होगा और वो गद्दी ले जाएगा. End of the story. Because I provide for and preserve all for those who have exclusive devotion for me, right? जिनका एक्सक्लूसिव डिवोशन रहता है भगवान पे, उन्हीं के लिए ही भगवान उन्हीं के हैं टेक्निकली, राइट? आत्मवन. Having the aim of God realization get established in the self eternal existence of God. आत्मवन. एम गॉड रियलाइजेशन है एंड एस्टैब्लिशिंग ऑफ सेल्फ. कि हम, अब मैंने वो जो डेफिनेशन बताई थी कि जो आपका सत्व गुण है वो आत्मन से रिलेट करता है, बीच की जो बुद्धि दैट इज ट्रांसपेरेंट, सो यू आर रिलेटिंग द सत्व गुण टू द आत्मन. आत्मन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गॉड. तो अगर आप सेल्फ को रियलाइज कर जाएंगे, जो आपका आत्मन है वो रियलाइज कर जाएंगे, देन यू विल अटेन सल्वेशन.
Appendix. Nirdvandva. In fact, the discrimination between the insentient, sentient, real, unreal, eternal, transitory, perishable, imperishable, etc., is also a pair of opposites. The desire for gain and security is also a duality. Because of duality, all is God. This reality is not realized. The reason is when all is God. Then how can duality between the sentient and the insentient subsist? Therefore, the Lord has declared himself both immortality as well as death, that is Sat as well as Asat. Amartam chaiva mrityuscha sadasaccha ham Arjuna. In Gita's 9 chapter 19th verse, यानी कि वो ही मृत्यु है और वो ही हैं जो मर नहीं है, who is Sat and Asat, who is real and unreal, right? All is God. तो ये मैंने अपने इनिशियल डिस्कोर्स में भी बताया था. आपको लाइव कैसा लगा ज़रूर बताइए. आज के लिए लाइव इतना ही. हम स्टार्ट करेंगे 46th वर्स से नेक्स्ट, विच इज़ इन द नेक्स्ट वीक. कल भगवद गीता नहीं होगा, कल होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, क्योंकि कुछ पार्ट मुझे लगा था इनकम्प्लीट है और मज़ा भी नहीं आया था बीच में रोकने में किसी कारणवश. तो मुझे लगा कि आज भी ये करना चाहिए. आपको डिस्कोर्स कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं. आपकी जो राय है वो भी मुझे बताएं. कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. आई होप आपका दिन अच्छा जाए, आपकी लाइफ अच्छी जाए, आप अपने परिवार से बातचीत करते रहिए, परिवार से जुड़े रहिए. मैं मिलूंगा आपको कल के लाइव डिस्कोर्स में 7 से 8, या फिर जल्दी भी हो सकता है, लेकिन 7 से 8 एक नॉर्मल टाइम रहता है. आई सी यू गाइस. जय श्री राम.